In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Good morning, everyone. How are you? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chicha Watni. Hope you are quite well. Now I am going to start discussion on today's topic. As you know, we are discussing about chapter number 6, natural regions. Today I am going to start discussion on topic important natural regions. Today's topic name is the rainforest region. Dear students, in the above mentioned major regions of the world, there can be found further regions on the basis of physical homogeneity. These regions are number one is rainforest. So let's start topic on discussion on rainforest. Location and countries. This region lies on both sides of equator between 5-degree latitude within the torrid region. Main countries in this region are Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka from Asia, Kenya, Uganda, Congo, and Gabon from Africa, Brazil, Colombia, Peru, and Ecuador from South America. Climate. Because this region lies within torrid region, the average temperature remains above 27 degrees centigrade throughout the year. The air gets heated and rises up, loses its temperature and causes rainfall. This is called convectional rain. The average annual rainfall exceeds 200 centimeters, which is maximum in the world. It is because of this abundant rainfall that the world's most dense forests are found in this region. Hence, this region is called rainforest region. Human activities. The people in this region depends upon forests and associated products for their food, clothing, shelter, and economic activities. They still cover their bodies with tree leaves and build their houses on trees. The wood is excellent for furniture and construction. Agriculture plantation is the main economic activity. Natural regions, natural rubber, cocoa, coffee, tea, banana, and coconut are important products of this region. Other agricultural products include vegetables like cassava and yams, which are grown by clearing a patch
a forest. This type of agriculture is called slash and burn cultivation. This region is also known for the manufacturing of natural rubber and coconut oil. डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट नेचुरल रीजन्स में पहला खिता रेन फॉरेस्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि इस खिते में बरआज़म एशिया के ममालिक, इंडोनेशिया के जज़ायर, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका, बरआज़म अफ्रीका के ममालिक कीनिया, युगंडा, कॉन्गो और गैबून, और बरआज़म जनूबी अमेरिका के ममालिक ब्राज़ील, कोलंबिया और एक्वाडोर और पेरू वगैरह शामिल हैं। आबो हवा क्लाइमेट ख़त्े इस्तवा और उसके नज़दीक वाक़या इलाक़ों में सूरज की किरणें सारा साल तकरीबन अमूदन पड़ती हैं, इसलिए इस खिते में सारा साल औसत दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। अज़ीज़ तलबा, ख़त्े इस्तवा पर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से हवा का दबाव कम रहता है। हवा हल्की होकर ऊपर उठती रहती है, जिसकी वजह से हवा का दर्जा हरारत गिर जाता है और तकसीफ का अमल बारिश बरसाने का सबब बनता है। ऐसी बारिश को ऐसाली बारिश कहते हैं। इस खिते में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी सालाना औसत मिक़दार 200 सेंटीमीटर से तजावुज़ कर जाती है। अज़ीज़ तलबा, यही वजह है कि इस खिते में दुनिया के घने तरीन डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे दुनिया के घने तरीन जंगलात पाए जाते हैं। इस खिते को बार्शी जंगलात के खिते के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंसानी सरगर्मियाँ देख लें कि इस खिते में लोगों को खुराक, लिबास, रहाइश और मौशी सरगर्मियों का लोगों की दारोमदार जंगलात और उनसे हासिल होने वाली अशिया पर है। जंगलों में रहने वाले अब भी दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म ढांपते हैं, दरख्तों पर घर बनाकर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जंगलात की जो लकड़ी है ये फर्नीचर बनाने के काम आती है और कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए या तामीराती कामों के लिए बेहतरीन है। यहाँ की अहम मौशी सरगर्मी शजरी ज़राअत है। ज़ाहिर है कि क्योंकि लकड़ी यहाँ पे ज़्यादा है, जंगलात हैं, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन भी जो है वो दरख्त काटना, यानी लकड़ी यही है इनका। शजरी ज़राअत कुदरती रबड़ का हसूल कोको या चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, केला, नारियल इस खिते की अहम पैदावार हैं। दीगर ज़रूरी अशिया में जैसे मैंने ज़िक्र किया अभी शकरकंदी की तरह की जड़ों वाली सब्ज़ियाँ। अब वो सब्ज़ियाँ कौन सी हैं? कसावा, अरवी और कचालू अहम हैं, जो जंगलात का एक कता साफ करके काश्त की जाती हैं। इस किस्म की ज़राअत को कटाओ जलाओ की ज़राअत, या मैंने इसको अभी आपको पढ़ के सुनाया कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, उसको आप उर्दू में पढ़ेंगे कटाओ जलाओ की ज़राअत, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। ये ज़राअत सिर्फ़ उसी खिते तक महदूद है। ये खिता लकड़ी, कुदरती रबड़ या नेचुरल रबड़ और नारियल के तेल की सनत के लिए मशहूर है।
آج تک کے لیے اتنا ہی عزیز طلباء. کل انشاءاللہ میں مونسون خطہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گی. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ نے توجہ سے سنا ہے اور اس کو سمجھا ہے. That's all about myself. Thank you very much for your kind attention. Stay well. See you next. Allah Hafiz.